Hello and good evening, everyone. I believe I am completely audible and visible to every one of you. I believe I am completely audible and visible to every one of you. Well, we are having this session of Indian polity and constitution related current affairs after a very long gap. I believe all of you had a very wonderful holidays. बहुत अच्छी दिवाली रही होगी आपकी, मैं आशा करता हूं. So with this, I would like to have your focus back on your studies and start preparing with more vigor, more attention, more concentration, more energy, and in a way that you have never prepared ever. Never ever prepared. All right. So starting with today's lecture, ज्ञान और विशेष बाद में कंटेंट पे आते हैं. तो सबसे पहले I would like to bring your focus on the thing that today we will be discussing three topics related to Indian polity and constitution and security. सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू भी आज हम डिस्कस करेंगे और पहला इशू जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो देयर विल बी वन टॉपिक रिलेटेड टू security issues, another topic related to government schemes, policies, and the last one will be related to Indian polity and constitution. The last topic that we will be discussing related to Indian polity and constitution is something that we have discussed earlier in the previous class also, that is related to power of governors. हमने वहां पे पढ़ा था कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सेशन को कॉल ऑफ करने में या कॉल करने में गवर्नर की क्या पावर्स है, क्या पावर्स नहीं है. Right? Today we will discuss about something else, some other powers of the governor. Recently it has been in news and thus we will discuss about it. So coming up to the first topic of today's lecture, the topic is related to recently conducted United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee meeting in Mumbai. Recently, just a minute, is the screen visible completely? Yeah, screen is visible. Okay, fine. तो रिसेंटली क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमिटी जो है उसकी मीटिंग कंडक्ट हुई थी मुंबई में. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट मीटिंग, व्हाई वाज दैट मीटिंग कंडक्टेड, एंड व्हाट वाज द फोकस ऑफ द मीटिंग, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट मीटिंग. दीज आर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस मीटिंग में जो भी चीजें हुई, और स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीटीसी, दैट इज काउंटर टेररिज्म कमिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज कंसर्न. बट एज फार एज और इस मीटिंग का आउटकम क्या था, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, मेंस पर्सपेक्टिव, द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज how India is focusing on countering terrorism at the global level, and how and what are the global efforts in countering terrorism. Okay, so these are certain subheads that we will be focusing upon, that we will be seeing today related to this particular current affairs item. Fine. What are the topics? First one is content, या फिर context क्या है, relevance क्या है इस particular न्यूज का. फोकस ऑफ द समिट क्या रहा है, देन व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द समिट. फोकस ऑफ द समिट, हाइलाइट्स ऑफ द समिट, यू माइट से सर बोथ आर सेम द थिंग्स. नो, बोथ आर एब्सोल्युटली नॉट सेम, बिकॉज फोकस इज अपॉन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट्स ऑन विच द मीटिंग वॉज कंडक्टेड, एंड हाइलाइट्स आर व्हाट वेंट थ्रू माइन्यूट्स. हाइलाइट्स मतलब माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग्स. Okay, good evening everyone, good evening Aditya, good evening Ravi, Vikram, Pratush, everyone, a very warm good evening to every one of you. ठीक है. Next, very important point, United Nations Security Council Counter Terrorism Committee के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है ये. What are the Indian initiatives to tackle terrorism? Terrorism को tackle करने के लिए in the past few years, what are the steps which have been taken by the Indian government, Indian administration? Next, what are the global efforts to tackle terrorism? Global level पे जो global agencies हैं उन्होंने क्या efforts लिए हैं
टेररिज्म को टैकल करने के लिए. दिस विल बी द सब टॉपिक्स दैट वी विल बी डीलिंग विद. कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस, रीसेंट मीटिंग जो मुंबई में हुई वो था रेलिवेंस. अब एक चीज और बता दूं, ये मीटिंग जो हुई थी ये मुंबई में हुई थी, ताज में जहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ है वहां पे ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी. एंड वेरी शॉर्ट फिल्म on the real events which took place during the Taj was aired during this meeting before the diplomats who all visited this meeting. जो भी डिप्लोमेट इस मीटिंग में आए उनके सामने पहली बार इंडिया ने जो रियल इवेंट्स which took place during those days when Mumbai was attacked by the terrorist, अजमल कसाब वाला जो इवेंट था पूरा उन्होंने प्ले किया था. और उसी जगह जहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, दैट इज मुंबई, ताज, जहां पे फॉरेनर्स काफी मरे थे, इंडियंस काफी मरे थे. राइट. नेक्स्ट इज फोकस ऑफ द समिट. क्या था? व्हाट वाज द फोकस ऑफ द समिट? वेल, द फोकस ऑफ द समिट वाज मेजरली द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी in spreading terrorism, in conducting the acts of terrorism. Good evening, Ashu. Good evening, Vrinda. Government job. Good evening, Ravi. Good evening. In front of Pakistani diplomat also, of course. ठीक है. तो पहला इसमें फोकस क्या था? Major focus of this meeting was to highlight or to showcase the use of technology in terrorism. How technology can be used in terrorism? First of all, the focus was on highlighting how the internet is being used for radicalizing the youth and recruiting them to conduct the act of terrorism. Radicalizing the youth and recruitment. That was the radicalization of youth and recruitment using internet. There is the first thing that was discussed. One of the things that were discussed during this meeting of UNSC CTC. Then, good evening, Rudra. Another thing was financing of terror act. Terror financing. Terror financing कैसे? Using cryptocurrency and virtual asset. Terror financing using cryptocurrency and other virtual assets. And what more? Use of unmanned aerial vehicles, that is drone. Use of unmanned aerial vehicles for terrorist strikes, transportation of drugs and arms. Transportation of drugs and arms. Using UAVs, unmanned aerial vehicles, which are also known as drones in layman language, for terrorist strikes, and transporting drugs and arms. Transporting drugs and arms. ठीक है. मेन फोकस एरिया, 3 फोकस एरिया थे इस मीटिंग के. इज दैट क्लियर एवरीवन? कौन कौन से 3 फोकस एरिया थे? ये क्लियर है? यस. स्पर्श, गुड इवनिंग.
इस पर्सन का मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया है। क्यों भाई, गुड इवनिंग नहीं बोलना था? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि इस समिट का आउटकम क्या था। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस समिट और मीटिंग? Outcome of this summit was Delhi Declaration on countering use of technology in terror related activities. दिल्ली डिक्लेरेशन, ये याद रखना आपको, अगर एग्जाम में आता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन, अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे थे कि मीटिंग जो मुंबई में हुई थी, दिल्ली डिक्लेरेशन क्यों हुआ? बिकॉज इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली डिक्लेरेशन में इंडिया वाज होस्टिंग दिस समिट. So Delhi Declaration on countering the use of technology in terror related activities. ठीक है, ये था इस पर्टिकुलर समिट का आउटकम, इस पर्टिकुलर मीटिंग का आउटकम. दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेरर पर्पसेस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमको देखना है कि व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ दिस मीटिंग. व्हाट वर द highlights of this meeting. Highlights of this meeting में India emphasized on the lack of global cooperation in fighting terrorism. India highlighted on lack of global cooperation in fighting terrorism. इंडिया ने हाईलाइट किया कि कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन जो है लैक कर रहा है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को फाइट करने के लिए. सबसे पहला एग्जांपल दिया उन्होंने पाकिस्तान का. इंडिया गेव द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान विच हैज नॉट येट प्रोसिक्यूटेड द परपिट्रेटर्स ऑफ अटैक इन इंडिया. जो इंडिया में टेरर अटैक्स हुए उनके जो परपिट्रेटर्स थे उनको अभी तक पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूट तक नहीं किया है. इसको इंडिया ने हाईलाइट किया. Secondly, India highlighted that USA has refused to extradite David Headley to India. David Headley was one of the mastermind of the 26/11 terror attacks in India. Right? But United States of America has refused to extradite David Headley to India. It's not only David Headley which USA refused to extradite. एक और टेररिस्ट थे तहव्वुर राणा, उसको भी उन्होंने नहीं भेजा. राइट? सो यूएसए के जो एक्टिविटीज थी, यूएसए के जो रोल था, यूएसए को जो करना चाहिए था वो इंडिया ने हाईलाइट किया. पाकिस्तान को जो करना चाहिए था वो इंडिया ने हाईलाइट किया. देन अगेन इंडिया हाईलाइटेड द recent continuous activity of China, wherein China is blocking India's initiative to label Lashkar-e-Taiba head as a global terrorist. चाइना उसमें बार बार वीटो कर देता है और इंडिया लश्कर-ए-तैयबा का जो हेड है उसको ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में उसको एंट्री करवाना चाह रहा है. वो एंटर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम चाइना. सो दैट इज हाउ इंडिया हाईलाइटेड द लैक ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन in fighting terror related activities or terrorists at the global level. What were the other things that were highlighted by the India? India said that effective and sustained efforts of counter-terrorism committee are required to fight this menace of terrorism.
continued and sustained effort of counter-terrorism committee are required to fight this menace of terrorism. Right? Then पहला तो हो गया, हाईलाइट कर दिया सब, वो क्या बोलता है, ग्लोबल कोऑपरेशन जो है उसको हाईलाइट किया कि कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन जो है लैक कर रहा है. सेकेंडली इसमें क्या था, इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स सीटीसी के चाहिए होंगे. इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड efforts of CTC are required. Third, India said that coordination among different global agencies are required. Coordination amongst different global agencies. Different global agencies are required. For example, normative efforts of United Nations Counter-Terrorism Committee should be coordinated with efforts of Financial Action Task Force, FATF. FATF की लिस्ट आती है, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, ब्राउन लिस्ट. ठीक है, तो उस लिस्ट के साथ उस जैसे एफएटीएफ के जो एक्शंस हैं और यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म काउंसिल कमिटी के जो एक्शंस हैं, दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, दे शुड बी इन सिंक विद ईच अदर. ऐसा नहीं कि इसने एक एक्शन लिया और ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है उस पर. यूएनसीटीसी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, बट एफएटीएफ इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन द टेरर ग्रुप और ऑन दैट टेररिस्ट. That should not take place. The coordination should be there among the global agencies. This is what India highlighted, right? Then India again said, and other members also said, that the resolutions which are passed by the United Nations Security Council should be effective. वो effective होना चाहिए, and it should not be rendered ineffective because of political reasons. ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन पास कर रहा है उसकी इफेक्टिवनेस खत्म नहीं होनी चाहिए. अब देखिए आज की डेट में अगर हम देखते हैं, यूक्रेन वाला जो इशू चल रहा है उस पर रशिया को लेकर बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा रशिया को रोकने में कामयाब हो गया? तो यूएन हैज बीन रेंडर्ड कंप्लीटली इनइफेक्टिव. सो इंडिया इज ट्राइंग टू रीसरेक्ट the power of United Nations. India is trying to resurrect the values with which United Nations Security Council was formed. ठीक है, तो UNSC resolutions should not be rendered ineffective because of political reasons. Because of political reasons. This was the fourth point. What was the next point? India again highlighted the importance of comprehensive convention on international terrorism. India ने फिर से बोला कि एक comprehensive convention on international terrorism should be held, then a resolution should be passed, a law should be made, and it should be ratified by every participating country of United Nations. India again called for comprehensive convention on इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि इंडिया 1996 से डिमांड कर रहा है. इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडिया इन द ईयर 1996, बट इवन आफ्टर कितने साल हो गए, 26 साल हो गए, इवन आफ्टर 26 years, क्वार्टर सेंचुरी, this has not taken place yet. So comprehensive
convention on counter terrorism, comprehensive convention on international terrorism, sorry, on comprehensive convention on international terrorism. ठीक है. Next highlight is that there was a focus, there was a discussion on recognizing the linkages between different organized crimes, drug trafficking, terrorist activities, and strengthening the multilateral efforts to break the backbone of these organized crimes, these structured crimes. Right? Recognizing the linkages and concerted global efforts to break this terrorism related nexus. Recognizing the linkages and breaking this terrorism nexus with concerted multilateral efforts. Concerted multilateral efforts. ठीक है, समझ गए कि हाईलाइट क्या था इस कंप्लीट जो ये मीटिंग थी. व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ दिस मीटिंग? इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Now we'll see about United Nations Security Council Counter Terrorism Committee. United Nations Security Council Counter Terrorism Committee के बारे में देखते हैं. क्या है ये चीज, कब ये फॉर्म हुई, कौन कौन इसके मेंबर हैं, दैट वी हैव टू सी. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी, यूएनएससी सीटीसी. वेल, आप सबने पढ़ा होगा 9/11 जो यूएस में अटैक हुए थे. ओसामा बिन लादेन का जो नाम आया था, तालिबान का नाम आया था, अलकायदा का नाम आया था, सॉरी. In the aftermath of the 9/11 attacks on US, United Nations Security Council passed a resolution. That resolution was 1373. Resolution number 1373. Resolution was passed in United Nations Security Council immediately after the 9/11 attacks on US, and this resolution was unanimously adopted by all the member countries of United Nations Security Council, and thus United Nations Security Council Counter Terrorism Committee was formed. This was adopted by all the 15 members, 5 permanent members, 5 permanent members plus 10 temporary members, plus 10 temporary members. ठीक है. Then what was the task given to United Nations Security Council CTC? UNSC CTC को टास्क क्या दिया गया था? गुड इवनिंग वैष्णवी, राइट.
इसका सबसे पहला टास्क था जो 1373 जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 1373 रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें जो भी चीजें मेंशन की गई थी, द जॉब ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीटीसी वाज टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन 1373. पहला था मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ monitoring the implementation of monitoring the implementation of monitoring the implementation of 1373 रेजोल्यूशन. अब उस रेजोल्यूशन में क्या मेंशन था, क्या चीज मॉनिटर करते हैं? उसमें यह मेंशन किया गया था दैट द पार्टिसिपेटिंग नेशंस शुड एनहांस देयर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी टू काउंटर टेरर एक्टिविटीज एट होम. जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशनल और लीगल मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और एनहांस करना पड़ेगा टू फाइट टेरर एक्टिविटीज एट देयर होम, डोमेस्टिक लेवल पे. राइट? क्या काम था इनका? Participating nations should enhance legal and institutional mechanism. Shall enhance legal and institutional should enhance legal and institutional mechanism should enhance legal and institutional mechanism to fight terror activities at home. अब ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, जो एनहांस किया जाएगा, वो बेसिकली किस चीज को फाइट करने के लिए जाएगा? आप मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल हम बोलते हैं तो आप डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिक्योरिटी अपैरेटस जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे. उसके अलावा और क्या? उसके अलावा और क्या करेंगे? किस तरह के लॉज लेके आएंगे? तो उसमें बेसिकली 3-4 चीजें थी जो कि कंट्रीज को एट द डोमेस्टिक लेवल इंप्लीमेंट करनी थी. फर्स्ट वाज क्रिमिनलाइजिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. फर्स्ट वाज क्रिमिनलाइजिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. criminalizing the financing of टेररिज्म. सेकेंड, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल अगर क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहा है, देन दैट इंडिविजुअल शुड बी कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल. गुड इवनिंग रश्मि. राइट? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें है एनी फंड रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टेररिस्ट शुड बी फ्रीज्ड. Right? That is freezing of funds. Freezing of funds of a person involved in terror activity. If it is proved that an individual is involved in terror activities, then all the funds related to that person will be freezed by the government of that particular country. Third was denying any sort of financial assistance or financial support for terrorist groups. Denying any sort of financial assistance or support to terror groups or terrorists. Right? Then suppressing the provision of safe haven. Safe haven आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. सेफ हेवन आपने
इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट आर सेफ हेवन्स, राइट? So there, the state should suppress the provision of safe haven, sustenance or support for terrorists. Safe haven for terrorists. They say Pakistan is a safe haven for terrorists. Terrorist activities are breeding there. Afghanistan is a safe haven for terrorists, right? So the country should take legal and institutional mechanism to stop being the safe haven for terrorists, safe haven for terrorists or sustenance of terrorists. बेसिकली इन चार चीजों को फोकस करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीटीसी वाज formed, and all the participating nations were asked to take actions in this regard. या टैक्स हेवंस जो थे उससे ही सेफ हेवंस होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है टेररिस्ट के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर टेररिस्ट, राइट? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यस प्लीज रेस्पॉन्ड बैक फास्ट, बी फास्ट एंड रेस्पॉन्ड बैक. Alright, now next thing that we have to see here, अब हम देखते हैं यहां पे हमने क्या क्या देख लिया. हमने देख लिया कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेलिवेंस क्या है, that we have seen, focus of the summit completed, highlights of the summit completed, about UNSC CTC completed, Indian initiatives to tackle terrorism, Indian गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टेररिज्म को टैकल करने के लिए. उससे पहले कैन एनी वन ऑफ यू डिफाइन टेररिज्म? आप लोग क्या टेररिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, आप में से कोई भी? Can any one of you define terrorism? What is terrorism? उसके बाद हम देखेंगे what steps India has taken. What is terrorism? Yes, please. बताइए. ट्रांसनेशनल एक्टिविटी तो बहुत सारी हैं. सारी ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्टिविटी थोड़ा ना होती हैं. यस प्रतुष, सारी ट्रांसनेशनल एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी थोड़ा ना होती हैं. See, I'll try to explain it in very simple terms. देखिए, पहली बात तो यह है ग्लोबली कोई अग्रीड डेफिनेशन अभी तक टेररिज्म की नहीं है, और इसीलिए इंडिया बोल रहा है एक कन्वेंशन, इंटरनेशनल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कन्वेंशन जो है वो कॉल किया जाए, राइट? तो ग्लोबल लेवल पे कोई अग्रीड डेफिनेशन एज सच नहीं है. हाँ, एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज ने अपनी अपनी डेफिनेशन निकाली हुई है. सबको मिला के एक डेफिनेशन जो है, एक डिस्कशन हम कर सकते हैं कि टेररिज्म क्या है, व्हाट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. Any act by any individual, any offense committed by any individual, wherein that act of an individual is directed towards intimidating a population. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का कोई एक्ट जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंटिमिडेट करने के लिए किया जाता है, wherein by which that individual tries to make the government or a particular organization do something or abstain from doing something. ठीक है,
ऐसे एक्ट, ऐसे ऑफेंसेस किसी इंडिविजुअल के जो कि एक बहुत बड़ी पब्लिक, बहुत बड़ी मास को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के, धमकाने के लिए लिया जाता है, और उस स्टेप से वो जो इंडिविजुअल है किसी सरकार को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करने पे मजबूर करता है या फिर कुछ नहीं करने के लिए रोकता है. These offenses, these acts can be termed as act of terrorism, which might involve, which can involve murders, which can involve murders, death, serious damage to public or private property, damage to property, places, facilities or systems resulting in or likely to result in a major economic loss. जान और माल का लॉस किसी भी तरह से करा जाए जिससे कि एक बड़ी मास को एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आप इंटिमिडेट कर सके और गवर्नमेंट को या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक्ट करने से रोकें या कोई एक्ट करने पे मजबूर करें. No. Terrorists do have an objective, Aditya. टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है डराना, धमकाना, लोगों को इंटिमिडेट करना, सरकार से कुछ करवाना, किसी को छुड़वाना, किसी के लिए कुछ छूट पाना. There are objectives to acts of terrorism. We cannot say they are objectiveless. We cannot say they are purposeless. Okay, now coming back to the topic, what are the steps which are taken by the Indian administration as far as countering terrorist activities are concerned? Well, after the 26/11 attacks in Mumbai, there were several steps which were taken by the Indian government to counter terrorist and terror related activities and breaking the back of terror related nexus in the country. First of all, as we have seen in 26/11 attacks, the terrorists entered into the Indian soil via seas. So the coastal security in India was beefed up. Coastal security in India is now very much beefed up, right? And a very high priority was given to beef up the coastal security in the country because India has a very big coastline. So maintaining security of that big coastline is also a very tremendous task. Okay. Secondly, National Investigation Agency was formed in the aftermath of 26/11. Not 26/11 अटैक नहीं, उससे पहले ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फॉर्म कर दिया गया था 2009 में. उससे पहले सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स होते, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हुए थे, अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बनारस में अटैक हुआ था हनुमान मंदिर में, then you know Mumbai में भी उस समय अटैक हुआ था. There were series of attacks which were taking place in India. In the wake of this, National Investigation Agency was formed in India in the year 2009. Then NatGrid was formed. What is NatGrid? National Intelligence Grid. NatGrid is National Intelligence Grid to create an appropriate database of security related issues. Security related information से को एक जगह गैदर करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन ग्रिड वाज फॉर्म्ड. देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी, जो कि मुंबई अटैक्स में जिनको भेजा गया था, ठीक है, तो एनएसजी को और बढ़ाया गया है. एनएसजी के जो ऑपरेशनल हब्स हैं, पहले गुड़गांव एक ऑपरेशनल हब हुआ करता था अकेला, एंड इट इज स्टिल द हेडक्वार्टर ऑफ एनएसजी इन इंडिया, गुड़गांव. ऑपरेशनल हब्स हैव बीन इंक्रीज एंड 4 न्यू ऑपरेशनल हब्स हैव बीन एडेड अप. एनएसजी के 4 न्यू ऑपरेशनल हब जो है इंडिया में डेवलप किए गए हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ 26/11 अटैक. देन अ मल्टी एजेंसी सेंटर हैज बीन डेवलप्ड व्हिच गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज and provide them with intelligence as and when required. Provide them with intelligence as and when required. Then कोस्टल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जॉइंट ऑपरेशन सेंटर डेवलप किया गया है जो कि कंट्रोल करता है कोस्टल सिक्योरिटी में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनको सारी एजेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं. तो जॉइंट ऑपरेशन सेंटर जो है इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक
सिक्योरिटी एजेंसी, कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसी, कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेवी, इन सबको मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है जहां से सबकी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन जो है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको ट्रांसफर किया जाता है एक जो रेलिवेंट एजेंसी उस समय काम कर रही है उसको। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विच आर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू टैकल टेररिज्म। नाउ कमिंग टू at the global level, what are the steps which have been taken? First is UNOCT, which is United Nations Office for Counter Terrorism. United Nations Office for Counter Terrorism. ठीक है, this is one stop office. This is a one stop point office, you can say, which coordinates all the actions of United Nations to counter terrorism and violent extremism. This is UNOCT. Then there is another organization of United Nations which is UNODC, that is United Nations Office for Drugs and Crime, which is United Nations Office for Drugs and Crime. And this UNODC basically tries to break the nexus, terrorism related nexus, that is organized crime हो गया, drugs trafficking हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, राइट, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड हो गया। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कैसे टेरर फंडिंग करते हैं, टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में इनका क्या हाथ है, उसको ये काम करता है। बेसिकली जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के पीछे की जो गतिविधियां हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिस तरह से टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को फंड कर रहे हैं या फिर उनको परपिट्रेट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो जो पीछे के जो एक्टिविटीज हैं उनको कर्व करने में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम जो है वो काम कर रहा है। देन देयर इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देन देयर इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच इज एजेंसी which works in the field of global money laundering and terror financing. ये जो FATF है ये काम करता है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग के फील्ड में और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए। ठीक है, FATF। देन वी हैव यूनाइटेड नेशन GCTS। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन GCTS? इट इज यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। It is United Nations Global Counter Terrorism Strategy, and this is one organization. This is one, you can say, United Nations initiative, which is a unique global instrument to enhance national, regional, and international efforts to counter terrorism. This UNGCTS has basically 4 pillars. What are those 4 pillars that we will see now? This UNGCTS has 4 pillars. First pillar is addressing the conditions conducive to the spread of terrorism. What are those conditions? What are those situations which are conducive for the spread of terrorism? We have to ward off those conditions. We have to clean up those conditions which are कैसे, जैसे गरीबी हो गई, communal riots हो गए, mob lynching हो गई, राइट, रेफ्यूजी स्टेटस हो गया, एट्रोसिटीज बाय द डिफेंस फोर्सेस हो गया, दीज आर सर्टेन, जिनोसाइड हो गया, राइट, सिविल वॉर हो गए, ये सारी जो सिचुएशंस हैं, दीज आर वेरी कंड्यूसिव फॉर द टेरर रिलेटेड ग्रुप्स टू रेडिकलाइज एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुका है, मेंटली वीक हो चुका है, फिजिकली वीक हो चुका है, तो उस समय उसको मैनिपुलेट करना उसके माइंड को बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसी सारी अगर सिचुएशंस हैं तो उनको खत्म करना इज वन स्ट्रेटेजी ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। सेकंड वन इज पिलर 2 विच इज प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग टेररिज्म, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, दैट इज प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग टेररिज्म। थर्ड पिलर is building states capacity and strengthening the role of United Nations. मतलब इंडिविजुअल जो स्टेट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करें और यूनाइटेड नेशंस को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएं। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। Ensuring human rights when you are countering terrorism, we should be ensuring
ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। और ये रूल ऑफ लॉ ही था जो इतने साल हमने अजमल कसाब को बैठा के रखा, और उससे एक फायदा, काफी फायदा हुआ, ग्लोबल सेंटीमेंट इंडिया के फेवर में आया। अगर हम उस समय मार देते तो पाकिस्तान ने बोल दिया ये हमारा आदमी नहीं है। बट व्हेन Kassab was interrogated number of times, he gave up many information related to terror related activities which were breeding in Pakistan. So it helped us gain the global confidence, global support, global sentiment. ठीक है, तो ये 4 पिलर्स हैं किसके, UNGCTS के, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी के। फाइन, यहां तक क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। यहां तक क्लियर, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बी फास्ट, रेस्पॉन्ड बैक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैशिंग schemes and cutting funds, which means recently there was an article in a newspaper wherein it highlighted that in the recent times, in the recent past, central government has reduced 50% of the government schemes. Either they have reduced the schemes, they have you can say subsumed the schemes, or they have revamped the schemes or rationalized the schemes. या तो स्कीम्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, या तो 2-3 स्कीम्स को मिला के एक स्कीम बना दी गई है, या दैट इज कॉल्ड सबज्यूम्ड, या फिर उसको कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया गया है, नई स्कीम की तरह उसको लेके आया गया है, या फिर उसको रैशनलाइज कर दिया गया है, मतलब कि उसके जो फंडिंग जो है उसको कम कर दिया गया है। ठीक है, सो इट सेज दैट अराउंड 50% of centrally sponsored schemes have been discontinued, subsumed, revamped और rationalized. ठीक है, इसमें हमको क्या क्या सब टॉपिक्स देखना, व्हाट आर द सब टॉपिक्स दैट वी हैव टू सी। सर आप पीपीटी से क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज पिक्चर्स जितना ज्यादा आपको मैं दिखा सकता हूं उससे ज्यादा आपके लिए इजी होता है रिवैम्प, रिवैम्प करना नहीं, रिवैम्प तो स्कीम में है, रिटेन करना। ठीक है, जितना आप पिक्चर देखेंगे उतना ज्यादा रिटेन करना आप सीखेंगे। जैसे कि ये पिक्चर है, देखिए यहां पे, इस पिक्चर में क्या है, रुपी में एक बैलून बनाया गया है और उसमें एक सुई चुभो दी गई है। उसका मतलब क्या हुआ है कि जो फंडिंग है वो डिक्रीज कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, जो फंडिंग जो है वो डिक्रीज कर दी गई है। पिक्टोरल जो डिस्प्ले होता है दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू रिटेन थिंग्स in a better way in your mind, and that is my way of teaching. दूसरे टीचर दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं, एंड आई बिलीव कि इस तरह से थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें लिखूंगा, 5 चीजें, उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको कम से कम टाइम में दे सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। राइट अनमोल? ऑलराइट, तो इसमें हमको व्हाट आर द subtopics that we have to see, how schemes have changed. We'll see certain ministries and what were the schemes that were continuing in that ministries and how many schemes are remaining now. That we will see. What are the status of the active schemes? जो आज की डेट में schemes active हैं, उनका क्या status है? That also we will see. Then what are the reasons behind slashing of funds? Reasons क्या है, क्यों funds को कम कर दिया जा रहा है, क्यों स्कीम्स को सबज्यूम कर दिया जा रहा है, रीवेम्प कर दिया जा रहा है, डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट वी विल बी सीइंग। एंड व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर करप्शन? करप्शन जो हो रहा है, जिसकी जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है इनको सबज्यूम करने के लिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट वी ऑल्सो वी विल बी सीइंग। एंड फाइनली विल सी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। फाइनली विल सी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। फाइन, लेट अस फर्स्ट सी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर Women and Child Development. Union Ministry for Women and Child Development.
Earlier this ministry used to have around 19 schemes. Earlier this particular ministry used to have 19 schemes within it. 19 schemes. अब ये schemes कम करके कितनी कर दी गई हैं? 3 schemes. Only 3 schemes are left with Ministry of Women and Child Development. Then there is another ministry, Ministry of Animal Husbandry and Dairy. Ministry of Animal Husbandry and Dairy. This ministry used to have around 12 schemes. Now only 2 schemes are left out with this scheme. 12 schemes में से अभी 2 schemes बची. ऐसा नहीं कि बाकी 10 schemes को खत्म कर दिया गया, but 2 schemes में सबको subsume कर दिया गया है, मिला दिया गया है. And then one scheme which was not working actually, या फिर वो जिस पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी, अगर वैसी और एक स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर किसी और स्कीम को हम वो ऑब्जेक्टिव पर्पस हम दे सकते हैं फुलफिल करने के लिए, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग अ सेपरेट स्कीम फॉर दैट सेक्टर, राइट? So out of 12, only 2 schemes are left out in Ministry of Animal Husbandry and Dairy. In similar lines, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Again, in this particular ministry, out of 20 schemes, only 3 schemes are left out now. 20 schemes में से सिर्फ 3 schemes जो हैं वो अब बची हुई हैं. So there have been, as said, as I said at the start, around 50% of the schemes have been either subsumed, discontinued, revamped, or you can say rationalized or rationalized. Well, government has their own reasons for doing so, but this has impacted people from different sectors and their needs and requirements pertaining to different areas of their life. Right? One very important reason behind discontinuing or revamping or subsuming this scheme is underutilization of the fund. Underutilization of the fund means the funds have been allocated by the particular ministry, the budget has been allocated for that particular scheme, but it is still being unused. It is still being unused by the ministry. Ministry क्या कर रही है? Ministry ने उस पैसे को बैंक में रखा हुआ है. बैंक में उस पैसे को रखा हुआ है, तो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है. तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट वहां पर अर्न कर रही है, बट the profit or the benefit which the public would have accrued because of these schemes being implemented at the ground level is not being taken care of and is not taking place. Right? So that is one reason, a very important reason why the funds are being or the schemes have been flashed. कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको यूज ही नहीं कर रही है. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ने उसको पैसे को फंड उसमें बैंक में रखा हुआ है. बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एक्टिव स्कीम्स? अभी हमने देख लिया कि जो स्कीम हटाई गई है वो तो हमने देख लिया क्यों हटाई गई है. भाई उनका पैसा जो है वो अंडर यूज हो रहा था, वो काम ही नहीं आ रहा था, वो पैसा ज्यादा फंड एलोकेट हो रहा होगा शायद. बट जो स्कीम्स एक्टिव है आज की डेट में, जिनको नहीं हटाया गया है, उनका क्या स्टेटस है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोज स्कीम्स? तो इसमें एक निर्भया स्कीम है विच इज मेंट फॉर अपग्रेडिंग द apparatus related to female security in the country. Female security at the workplace or at the public places, उसको और बढ़ाने के लिए
उसको और एनहांस करने के लिए एक निर्भया स्कीम जो है वो लाई गई थी। Since 2013, around 6,214 crore rupee have been allocated for this scheme. Around 6,214 crore rupee have been allocated for this Nirbhaya scheme. But उसमें से कितना खर्च हुआ है आज तक? Something around 4,000 crore. Something around 4,000 crores have been utilized so far from the Nirbhaya, from the fund which has been allocated for the Nirbhaya scheme. That means around 2,200 crore rupees have not been utilized, and the females are still not safe in the country. Female safety is still an issue in the country. Despite this fact, around 2,200 crore rupees have not yet been utilized from the fund which has been allocated by the ministry. This is the status, present status of the scheme which has not yet been discontinued. This is an active scheme. तो जो स्कीम एक्टिव नहीं है उसका क्या हाल हो रहा होगा, और शायद इसीलिए उनको हटाया गया. नाउ विल सी द रीजंस. नाउ विल सी द रीजंस बिहाइंड स्लैशिंग ऑफ फंड. विल सी द रीजंस बिहाइंड discontinuing certain schemes. We'll see reasons behind subsuming or revamping or reshaping the scheme, resizing the scheme. Right? सबसे पहला रीजन हमने यहां पे देख लिया है, विच इज द फंड्स लाइंग आइडल. फंड जो आइडल पड़े हुए थे बैंक्स में, यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, बैंक्स में पड़े हुए थे वो फंड. तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई वहां पे फंड पड़ा हुआ है, उससे अच्छा इस स्कीम्स को सब्ज्यूम कर दो, एक पर्टिकुलर एजेंसी को टास्क दो इस पर्टिकुलर जो इशू है उसको रिजोल्व करने के लिए, पर्टिकुलर जो टारगेट्स हैं स्कीम्स को उनको अचीव करने के लिए. नेक्स्ट वाज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. एक तो हो गया कि फंड यूज ही नहीं हुआ, एक हो गया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो हमने निर्भया स्कीम के केस में देखा. Out of 6,214 crore, only something around 4,000 crore have been utilized in that scheme. हाँ, अगर वुमेन सेफ्टी पूरी इंश्योर हो गई होती, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स चलो पूरे तो नहीं, चलो 90% खत्म हो गए होते, उसके बाद आप फंड यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड. बट द क्राइम्स अगेंस्ट फीमेल्स आर स्टिल टेकिंग प्लेस. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच रिक्वायर्स infrastructure development which is required at public places, public spaces to ensure female safety has not yet taken place. But still the funds are still being unused. Right? इसके पीछे करप्शन भी है. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का पैसा आ जाता है, मगर वो पैसा गया कहां उसके बाद वो पता नहीं है. नाउ वी विल सी द वेरियस रीजंस व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स. Reasons which are responsible for corruption or in the implementation of welfare schemes. पहला क्या है? Lack of scrutiny. Lack of scrutiny. ये जो schemes हैं, these are to be implemented at the grassroots level, right? Grassroots level मतलब कि छोटे लोकेलिटीज में, गांव में, अर्बन एरियाज में हो गया तो छोटी छोटी लोकेलिटीज जो होती हैं वहां पे ये इंप्लीमेंट होनी होती है इसकी. बट लैक ऑफ स्क्रूटनी, टाइमली इंस्पेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है. टाइमली ऑडिट होना चाहिए. जो फंड रिलीज हुआ है, जो फंड कहां पे खर्च हुआ, कितना उसका बेनिफिट हुआ, कितने लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो फंड, कितने लोगों के घर बने, कितने लोगों के टॉयलेट्स बने, कितने लोगों को, कितनी माओ को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए जो दवाई दी जाती है वो प्रोवाइड की गई. दैट इज कंप्लीटली लैकिंग. दैट इज लैक ऑफ स्क्रूटनी एट द ग्रास रूट लेवल विच इन्वॉल्व्स रेगुलर इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग. दीज थिंग्स आर कंप्लीटली मिसिंग, लीडिंग टू अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल एट द ग्रास रूट लेवल. ठीक है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस. There are many people, many individual, उनको पता ही नहीं है कि स्कीम कौन सी है. उनको पता ही नहीं है कि इस स्कीम के अंदर what are our rights, what are
our privileges under this particular scheme. People are not aware whether they have the right to question or audit the fund which has been released by the particular department for the implementation of the scheme. लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो फॉल्स बेनिफिशियरीज क्रिएट कर रही है, घोस्ट कार्ड्स बनवा रही है. घोस्ट कार्ड मतलब कि वो इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है, इंडिविजुअल को पता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट उसके नाम पे फंड रिलीज हुए जा रहा है, उसके नाम पे गेहूं रिलीज हुए जा रहा है, उसके नाम पे मनरेगा में जो वेजेस हैं वो निकली जा रही हैं. That is because of lack of awareness. Next is weak enforcement of laws. Weak enforcement of laws. एक लोकपाल की बात हो रही थी बहुत पहले से. लोकपाल बनाया गया, but that लोकपाल which has been the office of लोकपाल which has been constituted is completely ineffective. सो लोकपाल बनाया गया वही कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, तो बाकी लॉज जो एनफोर्स करने के लिए बनाए गए हैं वो कितने इनइफेक्टिव होंगे, यू कैन थिंक. तो एंटी करप्शन मूवमेंट, एंटी करप्शन को रोकने के लिए द लॉज विच हैव बीन मेड हैज कंप्लीटली रेंडर्ड इनइफेक्टिव. दे आर कंप्लीटली रेंडर्ड इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द जुडिशरी. केस ही सोल्व नहीं हो पा रहा है, स्टे पे स्टे लगा चला जा रहा है. Next is political inaction. Next is political inaction. Many of the officials which are working at the grassroots level, they have backing of one or the other political group. किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप या दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप की उनको बैकिंग अच्छी खासी होती है. It has been observed many a times that जो स्कीम्स वगैरह का जो इंप्लीमेंटेशन होता है उसमें पॉलिटिशियंस के फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, उनको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है, उनको वो इंप्लीमेंटेशन का काम मिल जाता है. एंड दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन द करप्शन एक्टिविटीज विच आर द फैमिली मेंबर्स और द रिलेटिव्स ऑफ अ पॉलिटिशियन. तो उनके खिलाफ अब कौन एक्शन ले, वो एक्शन नहीं होता. तो पॉलिटिकल इनएक्शन, और इनफैक्ट पॉलिटिशियंस जो होते हैं गवर्नमेंट को या फिर एजेंसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप भाई प्रोजेक्ट इनको दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दो, आप कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, उनको जितना फंड मिला उससे तो कुछ पैसा पॉलिटिशियन के पास आ रहा है. तो पॉलिटिशियन हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन द करप्ट एक्टिविटीज. आप रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स की बात छोड़िए. तो पॉलिटिकल इनएक्शन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई द करप्शन एट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इज नॉट बीइंग चेक्ड स्टिल. Next one is centralized administration. Centralized administration. जो लोकल लेवल जो गवर्नमेंट होती है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है विच इज पंचायती राज और यू कैन से अर्बन लोकल बॉडीज, दे हैव वेरी लेस पावर विद रिगार्ड्स टू implementation of these welfare schemes. Major power still remains with the bureaucracy. And the institutions which are directly involved with the people have very less power. अगर उनको ज्यादा पावर दे दी जाती है, जो पंचायत हैं या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी. अब ब्यूरोक्रेसी का क्या है, आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर वगैरह जो आते हैं, एसडीएम वगैरह जो आते हैं, गांव का चक्कर मारते हैं, चले जाते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. तो लोगों को शिकायत करने का मौका, लोगों को काउंटर करने का मौका ही नहीं मिलता है. But if the implementing agency or the main nodal agency is at the grassroots level, present at the grassroots level, मतलब कि अगर विलेज पंचायत जो है या फिर अर्बन लोकल बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्हीं को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मैक्सिमम स्कीम्स का बना दिया जाता है, तो दे आर इन रेगुलर टच विद द पीपल. गांव में कोई पंचायती इंस्टीट्यूशन है, उससे लोग डेली मिलते हैं. तो अगर लोगों को पता चलेगा भाई इतना फंड एलोकेट हुआ है, तो वो डायरेक्टली उस सरपंच से पूछ सकते हैं, भाई पैसा इतना एलोकेट हुआ था, आपने ये पैसा कहां पे खर्च किया? आपने तो बोला कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मगर दिख तो रहा नहीं है. आपने बोला सड़क बन गई है, मगर गड्ढे तो पड़े हुए हैं, पानी तो भरा हुआ है. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी खत्म करके उसको और अगर डिसेंट्रलाइज किया जाए, और इफ द पावर्स आर गिवन टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोकल लेवल, देन
और बेटर सिचुएशन हो सकती है. नेक्स्ट वन इज जुडिशियल डिलेज. नेक्स्ट वन इज जुडिशियल डिलेज. दिस इज, ये एक ऐसा रीजन है जो कि आप बहुत जगह मार सकते हो, बहुत जगह लिख सकते हो. जुडिशियल डिले. करप्शन एक्टिविटीज क्यों खत्म नहीं हुई? जुडिशियल डिले भाई. ठीक है. ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर से रिलेटेड कोई क्राइम, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? जुडिशियल डिले. मतलब कि इतने ज्यादा बर्डन है हमारी जुडिशरी के ऊपर दैट द केसेस आर नॉट बीइंग हर्ड और गिवन वर्डिक्ट ऑन टाइम. टाइमली वर्डिक्ट ही नहीं दिया जा रहा है, टाइमली उनका डिसीजन जो है वो नहीं आ पा रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ विच द पर्सन कंटिन्यूज टू बी इन दैट पोजिशन एंड कंटिन्यूज टू बी इन्वॉल्व इन करप्ट एक्टिविटीज. एंड द लास्ट वन इज वीक लोकल गवर्नेंस, जो मैंने यहां पे बात की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाली. तो लोकल गवर्नेंस है वो ही अपने आप में बहुत वीक है, बहुत पावर कम दी गई है उनको, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज उनको नहीं बनाया गया. तो दैट इज वन अनदर रीजन व्हाई द करप्ट एक्टिविटीज एट द in the implementation of welfare scheme at the grassroots level is not still being checked. What should be done? Welfare इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, जब से जीएसटी आया है उसके बाद से स्टेट्स की फंडिंग कम हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट फंडिंग ज्यादा करती है. तो इसका मतलब यह है कि डिसेंट्रलाइज अगर हमको करना है तो हमको पहले एक नेशनल लेवल पे करना पड़ेगा. सो स्टेट शुड बी गेटिंग मोर फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहला डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्यादा फंड स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे. देन नीड ऑफ एफिशिएंट सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्वेंट, दे शुड बी मोर एफिशिएंट. जो रेड टेपिज्म, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की जो बात होती है वो चीजें ना हो, फ्लुएंटली चीजें जो है वो काम करें. एंड पावर शुड बी गिवन मोर टू द लोकल authorities. Regular audits should be there. Inspection of implementing agencies should be there. Regular audit of funds which have been spent should take place. So this is how the efficiency of the civil services, civil servants can be improved. And public service delivery mechanisms should be upgraded, should be revamped. जो पब्लिक को जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो प्रोसीजर है, that should be revamped. We should understand that the services which are meant for the public should be provided to them. At least maximum of the services which are made for the public should be provided to them at the doorstep itself. मैक्सिमम जो, अगर देखिए आप वो उनको, आप लोगों को, गरीब लोगों को जो कि ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, जिनको अपना डेली की कमाई के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, उनको आप बोलेंगे भैया अपने कागज लेके ऑफिस आओ फिर तुमको इतना पैसा मिल जाएगा. सो इट इज वेरी इनह्यूमन फॉर अस और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू आस्क देम सच थिंग्स. बिकॉज उनको अगर आप एक दिन वो ऑफिस चले जाते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा इसकी भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि डेली कमाओ और खाओ वाला कंडीशन भी रहता है काफी लोगों को. ठीक है. सो दिस इज द वे फॉरवर्ड with which we can reduce corrupt activities at the grassroots level as far as the implementation of welfare schemes are concerned. Okay, so this is all that we have for today. We'll meet in the next week with the different set of topics. We had another topic to be discussed today, but we are not discussing it today because of the time, because that will take much time. The topic is a big topic and it will take much time. So we'll be covering that topic in the next class along with other topics of Indian polity and constitution. Till then, good luck, all the best and keep studying. Goodbye.